And now from the transport fleet and mixed formations, please get up for a faster speed as we now bring for you pure fighter formations. In the lead, Bahadur formation comprising 5 MiG-21 Bison aircraft flying in arrowhead formation. The Bahadur formation today led by Group Captain M. Tiwari. Other members of the formation, Wing Commander Kadian, Wing Commander Jisrotia, Wing Commander Vyas and Squadron Leader Saxena. Earlier version of MiG-21 played a crucial role in providing air superiority over vital points and vital areas during the 1971 war. And there you can see Bison formation led by Group Captain M. Tiwari. 1971 के युद्ध में मिग-21 विमानों ने अपने अद्भुत सैन्य कौशल से दुश्मनों को हैरत में डाल दिया था, उन्हें चकित कर दिया था, परास्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। और बहादुर फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन एम तिवारी। Coming up next is Shamsher formation, 5 Jaguar deep penetration strike aircraft flying in arrowhead formation. Formation led by Group Captain Gaurav Archaria, Commanding Officer 14th Squadron. Other members of the formation are Wing Commander Rohit Rai, Wing Commander D.K. Sharma, Wing Commander Mayank Pawar and Squadron Leader Jigar Dalsania. Jaguar aircraft capable of striking enemy's ground installations using air-to-ground missiles and bombs. And there you can see Shamsher formation, 5 Jaguar deep penetration strike aircraft. Watch the leader pull up and the wingman split. Formation led by Group Captain Gaurav Archaria. 14 स्क्वाड्रन शमशेर फॉर्मेशन और इसका नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन गौरव अर्चारिया। 1971 के युद्ध में इस स्क्वाड्रन ने अहम भूमिका निभाई थी। Next in line is Vijay formation comprising 5 MiG-29 air superiority fighter aircraft of 47th Squadron. During the 1971 war, the squadron undertook various missions like strikes, escorts and combat air patrol. This formation will be led by Group Captain Jijo Jose Overlook, Commanding Officer of 47th Squadron. The other members in the formation are Group Captain A. Ranjan, Wing Commander M. Sharma, Wing Commander Mukesh and Wing Commander Satyendra Singh. And that's the Vijay formation comprising 5 MiG-29 air superiority fighters. 1971 के युद्ध में अद्भुत प्रदर्शन के लिए 47 स्क्वाड्रन को 2 वीर चक्र प्रदान किए गए थे। विजय फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन जीजो जोस ओविलिल। And keep your eyes riveted onto the television screens as the next formation is the Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI air dominance multi-role fighter aircraft. The formation will carry out a Trishul maneuver right in front of the spectators here, where the leader will pull up the wingmen splitting in an upward climbing maneuver to cast a Trishul or a trident up in the blue sky. The formation led by Group Captain Amit Rai Tamta. यहाँ मौजूद जनसमूह रोमांच और उत्साह के साथ आकाश की ओर नजरें टिकाए हुए हैं, जहां एक के बाद एक विमान करतब दिखा रहे हैं और ये है त्रिशूल फॉर्मेशन। That's the Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI, casting a trident or a Trishul up in the blue sky, signifying the tri-services synergy. त्रिशूल का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अमित राय टमटा। And that's the glimpse of our heritage flight, the Harvard aircraft and the Tiger Moth that will take off. And you can see the Harvard that is just taken off to the skies. They will come and perform a little later. A bright yellow painted aircraft of the vintage flight of the Indian Air Force that is taken off to come and display a little later. कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, कहीं भी तैनात कर दीजिए, कहीं भी भेज दीजिए, ये वायु सैनिक हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही सिद्ध होते हैं। And now you can see Pratap formation comprising 1 Dakota flanked by 2 Dornier aircraft. इसकी अगुवाई कर रहे हैं विंग कमांडर सिद्धार्थ गहलोत और विंग कमांडर ए.के. सिंह। This formation is a tribute to the legends and their glorious flying machines that they operated. Dakota was one of the most versatile transport aircraft of its time.
glimpse of the Surya Kiran aerobatic team, the aircraft now taking off for a display a little later. अनुशासन है, उत्साह है, लय है और देश के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा है और आज उन सब का प्रदर्शन हिंडन एयरबेस स्टेशन पर वायुसेना दिवस के अवसर पर होता हुआ है। इन वायु योद्धाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हिमालय की ऊंचाइयां हो, समुद्र की रहस्य भरी गहराइयां हो, विशाल आकाश हो या निर्जन स्थानों में स्थित कंदराएं हों, भारतीय वायु सैनिक इन सभी क्षेत्रों में अपनी रोमांचक गतिविधियों को लेकर सबसे आगे रहते हैं। And this is the time for our air display by the vintage flight of the Indian Air Force. We will have the vintage aircraft, Tiger Moth and Howard of a vintage flight. The Tiger Moth aircraft, painted in bright yellow color, appears to be as the master of this sky over Hindon airspace right now. The aircraft in command of Wing Commander Amit Dhopavkar. This aircraft was built in the year 1940 and has served with the Royal Air Force, the Royal Indian Air Force and the Indian Air Force prior to its retirement in 1950. It was restored to airworthy status and re-inducted into the Indian Air Force's vintage aircraft fleet in the year 2012. Flying beautifully like a bird up in the blue sky. That's the Tiger. रोमांच अपने चरम पर है। हिंडन एयरबेस स्टेशन पर वायुसेना दिवस परेड के अवसर पर वायु करतब दिखाते भारतीय वायु सैनिक। We also have along with Tiger Moth the Howard aircraft being flown today by Wing Commander Dheeraj Gulati. रोमांच इन वायु योद्धाओं के जीवन का इस कदर अंग बन जाता है कि चाहे युद्ध में विजय प्राप्त करनी हो या शांति काल में नागरिकों की सहायता करनी हो, ये हमेशा सबसे आगे रहते हैं। That's the Tiger Moths now coming for a landing. In the meantime, flying in from the left, do notice the Howard. This is the Howard in command of Wing Commander Dheeraj Gulati. ये गर्जना है, ये उद्घोष है, ये बताने के लिए कि भारत की वायु सीमाएं इन वायु सैनिकों के नेतृत्व में पूरी तरीके से चौकस हैं, सुरक्षित हैं। The Howard was long used as the advanced trainer to train a generation of Indian pilots before they went on to fly Hurricanes and Spitfire. These vintage flying machines will continue to fly and inspire future generation of aviators and engineers. Ladies and gentlemen, let's Howard give aircraft. a round of applause for the aircraft of the heritage flight as they land behind the backdrop. इन सब के पीछे एक कठिन साधना छिपी होती है, तपस्या होती है, कड़ी मेहनत